So right now Shylock is extremely disturbed. He's mentally disturbed because his daughter Jessica has eloped with a Christian whose name is Lorenzo. And Shylock hates Christians because of the behavior he received from Antonio, the Christian, and all other Christians, right? So in this particular scene, we will get about the detailed characteristics of Shylock. Yes, you are right. Today I have brought The Merchant of Venice romantic comedy written by William Shakespeare, Act 2, Scene 8. So without wasting any more time, let's get into the chapter. Take the book, take a pencil and highlighters so that you can mark down all the keywords. This particular scene is taking place in Venice, a street, okay? And the scene starts with two characters that are Salarino and Salanio. So Salarino, what he is telling, why man, I saw Bassanio under sail. With him is Graciano gone along, and in their ship I am sure Lorenzo is not. I am sure Lorenzo is not. Circle करो और वहाँ पे लिख लो confident. Okay, that means Salarino is completely confident that when he saw Bassanio, that Bassanio was under sail, okay, and Graciano was there, but Lorenzo was not there. Salanio, the villain Jew is the keyword, and आप लोगों को पता है विलेन जीव मतलब यहाँ पे किसे रेफर किया जा रहा है, शाइलॉक को, राइट? द विलेन जीव विथ आउटक्राइज रेज द ड्यूक हु वेंट विथ हिम टू सर्च बसानियोस शिप. और वहां पे जब शाइलॉक को पता चला कि उनका बेटी जो है वो भाग गई है, तो इतना चिल्लाने लगा, वो इतना एक सीन क्रिएट करने लगा ड्यूक के सामने जाके कि ड्यूक खुद शाइलॉक के साथ गया है क्या न चेक करने कि जिस शिप में वो लोग गया है उसमें जेसिका और लोरेंजो है कि नहीं. सलारिनो, ही केम टू लेट, बट दैट मींस व्हेन ड्यूक एंड Shylock reached the place at that time, the ship was already under sail. Okay, he came too late, the ship was under sail, but there the Duke was given to understand. Given to understand इसे ब्रैकेट में रखो, वहां पे लिख लो told. That means when Shylock and Duke reached there, the Duke was told that in a gondola another keyword, okay, were seen together Lorenzo and his amorous Jessica. Amorous Jessica बहुत अच्छा keyword है. like आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि जेसिका सिर्फ भागी अपने घर से, ऐसा नहीं है, वो पैसा ज्वेलरी ये सब लेके भागी है. दैट इज द रीजन इन दिस पर्टिकुलर सीन जेसिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज amorous Jessica. Besides, Antonio certified the Duke that they were not with Bassanio in his ship. So when Shylock and the Duke reached that particular place at that time, the ship was already under sail. Okay, so and the Duke was told over there that no, Jessica और Lorenzo तो उस वहाँ पे नहीं था. Okay, और Antonio जो है, Antonio Duke को एश्योर किया कि बसानियो गया है, ये सही बात है, लेकिन जेसिका और लोरेंजो जो है वो बसानियो के शिप में नहीं है. सलारिनो, I never heard a passion so confused. I never heard a passion so confused. That means I have never seen this kind of confusing outburst. That means actually देखो, पहले हम लोग को पता चल गया कि शाइलॉक जो है वो पैसा का भूखा है, वो ज्वेलरी का भूखा है, राइट? ही इज एक्सट्रीमली ग्रीडी. सो अब उनकी बेटी जो है जेसिका, वो तो घर से भाग गई है सारा पैसा और ज्वेल लेके. सो दैट इज द रीजन सलानियो इज टेलिंग, आई हैव नेवर हर्ड अ पैशन सो कंफ्यूज्ड, सो स्ट्रेंज, आउटरीजियस एंड सो वेरिएबल एज द डॉग जीव. वंस अगेन डॉग जीव, दैट मीन्स शाइलॉक, डिड अटर इन द स्ट्रीट. तो मैंने ऐसे इंसान नहीं देखा कि वो रास्ते पे ऐसे चिल्ला रहा था, ऐसे बात कर रहा था. My daughter, oh my ducats, oh my daughter, fled with a Christian, oh my Christian ducats, justice, the law, my ducats, and my daughter, a sealed bag, 2 sealed bags of ducats, a sealed bag, 2 sealed bags of ducats, of double ducats, stolen from me by my daughter, and jewels, 2 stones, 2 rich and precious stones, stolen by my daughter, justice, find the girl, she had the stones upon her, and the ducats. So we are getting the confusing state of mind of Shylock, that Shylock अब अपने आप में नहीं है. जेसिका जो घर से भाग गई, ये सारा पैसा और ज्वेलरी लेके, ये एकदम पागल कर दिया है शाइलॉक को. सो शाइलॉक एकदम चिल्ला रहा है रास्ते पे, ओ माय गॉड, ओ माय डॉटर, माय डकेट्स, द क्रिश्चियन डकेट्स. उनके हाथ में कुछ स्टोन्स भी था, सब चला गया मुझसे, मेरे पास कोई नहीं है, मैं भिखारी बन गया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बेटी मुझे एकदम लूट के चली गई, मुझे जस्टिस चाहिए, उस लड़की को ढूंढो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. क्रिश्चियन डकेट्स, वाई क्रिश्चियन डकेट्स? बिकॉज जेसिका हैज फ्लेड विद अ क्रिश्चियन. ओके,
So, ऐसे करके वो रास्ते पे चिल्ला रहा था सलारिनो. Why all the boys in Venice follow him, crying his stones, his daughter and his jacket. So this is a sense of humor. सब सलारिनो बोला अरे बोलो मत, वो तो ऐसे रास्ते पे चिल्ला रहा था कि जैसा छोटा छोटा बच्चा है ना, वो लोग भी उसे देख के चिल्ला था कि my daughter, my jackets, my Christian jackets. ऐसे करके वो लोग भी चिल्ला रहा था. सलानियो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ डॉग जीव, विलेन जीव यही सब नहीं बोल रहा है, सलारिनो और सलानियो मिलके मॉक भी कर रहा है किसको? शाइलॉक को. Salanio, let good Antonio look he keep his day or he shall pay for this. So Salanio, we are getting the characteristics of Salanio that he is well wisher of Antonio. So he is wishing that जिस दिन एंटोनियो का अपना प्रॉमिस जो वो डेट पे करना है, ठीक है, तो काश उस दिन वो अपना जो सारा पैसा है 3000 डकेट जो एंटोनियो ने लिया था किसके लिए? बसानियो के लिए, वो पे कर सके. नहीं तो उसके लिए एंटोनियो को पे करना होगा हेवी रकम, दैट 1 pound ऑफ फ्लैश, राइट? सलारिनो, Mary, well remembered, I reasoned with a Frenchman yesterday who told me in the narrow seas that part the French and English, English channel, you know, that divides France and England, okay, English channel, they are miscarried. A vessel of our country richly fraught means full of riches. I thought upon Antonio when he told me and wished in silence that it were not his. So Salarino जो है वो मैं बोल रहा है, you know, last day one Frenchman told me that there in English channel, okay, a shipwreck was there and the ship was full of rich, full of wealth. So as soon as I heard about the news, then and there the thought of Antonio popped up in my mind and in silent I prayed, हे भगवान, वो जहाज जो वहां पे डूब गया है, जो शिपरेक हुआ है, वो एंटोनियो का जहाज ना हो. क्यों? क्योंकि एंटोनियो का अगर जहाज वहां पे डूब जाएगा, ओके, तो अगर उनका इतना ह्यूज लॉस होगा तो एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी to Shylock, and Shylock would take 1 pound of flesh. So it would be a huge loss to Antonio as well as the Christian community, because Antonio is a well-known businessman, established businessman in Christian community in Venice, and it will be a huge loss to MOV also. Salanio, you are best to tell Antonio what you hear, yet do not suddenly, for it may grieve him. अब Salanio बोला, Salanio is very concerned, okay, कि तुम एक काम करो, तुम ये बात एंटोनियो को जाके बताओ, ठीक है, लेकिन अचानक से सब कुछ मत बता देना, धीरे धीरे उसे बताना ताकि उसे वो ले पाए वो बात. अचानक से होता है ना कि कुछ बैड न्यूज़ अगर अचानक से किसी को दे दिया जाए तो एकदम मतलब स्टन हो जाता है, एकदम ओके, शॉक लगता है. तो इसीलिए अगर ये सच भी होगा तो एंटोनियो को डायरेक्ट आप मत बताना, धीरे धीरे आप एंटोनियो की ये बात बताओ कि आपने ये सब सुना है, ताकि एंटोनियो इकोनॉमिकली एज वेल एज मेंटली वो प्रिपेयर रहे. सलारिनो, अ काइंडर जेंटलमैन आप लोग समझ गए, एंटोनियो को बता रहा है, ठीक है, मार्क कर लो, ये कीवर्ड है. अ काइंडर जेंटलमैन treats not the earth. I saw Bassanio and Antonio part. Bassanio told him he would make some speed of his return. He answered, तो बोले, you know what a nice gentleman, kind gentleman Antonio is. Okay, and I know when Bassanio and Antonio parted, Bassanio told him that he would complete his work very fast and he would return. And in answer, he answered, that means Antonio ने क्या आंसर दिया था? Do not so ऐसा मत करना. Slubber not business for my sake, Bassanio, but stay there very reaping of time. So don't get in hurry. Okay, and you just stay there until and unless your work is completely and fully done. Let it. And for the Jews bond which he hath of me, let it not enter in your mind of love. और बसानियो को अब ये भी कहा एंटोनियो ने कि तुम्हारे लिए जो पैसा मैंने उधार लिया, ठीक है, वो सब बात तुम एकदम मत सोचना. तुम वहाँ पे जा रहे हो शादी करने, पोर्शिया जिसे तुम प्यार करते हो उसे तुम पाने जा रहे हो, तो तुम वहीं पे जाओ, उसी बात को लेके रहो, ठीक है. तुम इन सब बातों के बारे में एकदम चिंता मत करना. बी मेरी, सो बी हैप्पी एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू courtship and such fear ostent love. So be happy and focused on your goal and other sides of the love as shall conveniently become you dear. So this is the reply Antonio gave
टू हिम टू होम बसानियो, इसे मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड इवन देयर हिज आईज बीइंग बिग विथ टीयर्स एंड एट दैट टाइम द सिनेरियो वाज सो पैथेटिक, okay, so full of sadness that, like, you know, Antonio and Bassanio, both of them, Bassanio is leaving Antonio for going to Belmont, okay, and Antonio was feeling very sad, he was feeling very grieved, he was crying, like, you know, tears were coming, rolling down of his cheek, big tears. And even there his eye being big with tears, turning his face, he put his hand behind him. एंटोनियो जो है वो नहीं चाह रहा था कि बसानियो देखे कि एंटोनियो रो रहा है. वाई? इट माइट प्रिवेंट बसानियो टू गो टू बेलमंट. ऐसा भी हो सकता है कि बसानियो वहां पे चला गया है लेकिन काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा है. ही वुड नॉट पे कंसेंट्रेट on his work because the thing will be going in his subconscious mind that my friend was crying. Okay, so turning his face, he put his hand behind him and with affection, wondrous sensible, another keyword, that means with kind heart, okay, wondrous sensible, he wrung Bassanio's hand and so they parted. तो एकदम मतलब with kind heart handshake किया और बसानियो वहां से चला गया. सलानियो, I think he only loves the world for him. That means सलानियो का ये एक ओपिनियन है कि I think Antonio loves the world because Bassanio lives on the earth. Okay, I pray thee, let us go and find him out and quicken his embraced heaviness with some delight or other. चलो चले काम करते हैं, पहले हम लोग ढूंढते हैं कि एंटोनियो कहाँ है. ठीक है, हालांकि उनका मूड थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि दो बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटोनियो मस्ट बी वेरी सैड राइट नाउ बिकॉज हिज वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड Bassanio is not there. Though Bassanio has gone to Belmont for his work and Antonio knows it very well, but then also he must feel the sadness. He must be unhappy for not getting Bassanio with him. And if Antonio would come to know about the shipwreck, okay, though it is not sure, it is not assured if the ship is of Antonio's or not, but then also it would disturb Antonio mentally. Okay, that is the reason Salanio and Salarino are planning, let us find Antonio and then we will try to change his mood. Salanio, do we so? हाँ चलो हम लोग ऐसे करते हैं. So ये छोटा सा सीन है. अब significant of the scene ये मार्क कर लेना, लिख लेना कि दिस सीन इज अ मिक्सचर ऑफ लॉसेस बोथ फॉर एंटोनियो एंड शाइलॉक. इफ एंटोनियो हैज रियली अ शिपरेक देन इट वुड बी अ ह्यूज लॉस टू एमओवी, राइट. तो ये जो सीन है दोनों का लॉस हम लोग एक ही सीन में हम लोग पढ़ रहे हैं. एंटोनियो का एक लॉस है जो कि अभी तक मतलब कंफर्मेशन नहीं है, राइट, कि वो जो शिपरेक वहां पे हुआ है वो एंटोनियो का है या नहीं वो शिप. सो इट इज नॉट कंफर्म्ड येट, बट देन ऑल्सो लेट इट टेक एज एन एग्जाम्पल दैट द शिप इज ऑफ एंटोनियो. ओके, और शाइलॉक का जो लॉसेस है, बेटी भाग गई है, उसके ऊपर उसका पैसा ये सब भी लेके चली गई है. सो बोथ द लॉस ऑफ बोथ the characters, antagonist and protagonist, okay, we are getting in this particular scene. Next, Shylock is completely, I mean, mentally disturbed. We already came to know about it that he is crying in the street, like, you know, like my decades, two precious stones. This kind of crying he in the street of Venice. So Shylock is completely mentally disturbed, confused, puzzled, perplexed, what you can say. And last meeting of Antonio and Bassanio before Bassanio leaves for Belmont. So अब ये जो सीन है, इस सीन के बाद ही इसी सीन में क्या होता है कि बसानियो एंड बेलमंट में चला जाता है. सो बिफोर बसानियो लीव्स फॉर बेलमंट, दिस इज द लास्ट मीटिंग ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो. एंड थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन इज फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी. ये अब एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है. लाइक यू नो, बसानियो, एंटोनियो वाज फीलिंग एक्सट्रीमली सैड व्हेन बसानियो वाज लीविंग हिम. ही वाज काइंड ऑफ क्राइंग, ही वाज हाइडिंग हिज टीयर्स, ओके, एंड ग्रीड फॉर मनी. दैट हुज शाइलॉक, उनका बेटी भाग गई, उससे ज्यादा दुख पहुंचाए उसे ये सोच के कि उसका पैसा, ज्वेलरी, ये सब चला गया है. सो छोटा सा सीन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. आप लोग फिर भी मुझे बताना अगर कोई प्रॉब्लम होगा. एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन बिकॉज आई नो यू हैव लाइक द वीडियो, द एक्सप्लेनेशन.
very soon we will bring some grammar videos, okay? And please write something to me if you like. comment करना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि सारा नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिले जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ, ओके? सो कम ऑन, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।